आजकल तो और भी ज़्यादा ये ऊझा बोर्ड से जो स्पिरिट्स को बुलाते हैं, मैम क्या ये एक्चुअली होता है? I want to tell my audience you should never, ever, ever try and try. वी हैव हर्ड दैट मैरिज रिचुअल्स जब होते हैं उस वक्त द एनर्जी इज वेरी हाई एंड द चांस ऑफ गेटिंग somebody possessed is very high. I've seen the bride getting ready, completely okay. And she just ended up touching a lady's feet. And after the Fairas, she was somebody else. Nobody could find who that lady was. She did not come in any of the videos. And the videos were recorded. And जो वो bride थी, वो अभी तक stable नहीं है. उसके अंदर अभी भी 2 जिन हैं. I've done a lot of house clearings. It's part of what I do. अगर मैं रोज की क्लियरिंग नहीं करूं तो मेरे बालकनी के बाहर, मेरी खिड़कियों के बाहर रोज हजारों स्पिरिट्स होती हैं. क्लियरिंग नहीं करूँ का क्या तो मतलब? मैं उनको हर रोज लाइट में भेजती हूँ. Talking about suicide, many people want to connect with a person who's died by suicide. Do you think it's possible? Of course it's possible. I've connected myself to Sushant Singh. Suicides are not in the end done by conscious will or choice. In the end, suicides are aided by an entity attack. Hello and welcome to NMN Pods. My name is Rishika. Meet Dr. Manmeet Kumar, a spiritual coach, healer, and founder of Soul Miracles, a space for growth and self-discovery. Dr. Manmeet is a gifted psychic and medium who uses her abilities to help people uncover clarity, purpose, and inner peace. She's touched countless lives, helping people heal and transform. Today, we'll explore her journey and how spirituality can unlock new possibilities in life. So grab your coffee and find a cozy spot because today we are going to dive into an inspiring conversation. Now let's come to the most favorite topic of the internet, ghost. Paranormal. Paranormal, possessions. Tell me one thing that we have heard that marriage rituals जब होते हैं उस वक्त the energy is very high and the chance of getting somebody possessed is very high. Can somebody really get possessed Yes. in a marriage ritual? Yes. I have seen it very closely. I've seen it very, very closely. I've seen the bride getting ready, and I was a child then. I've seen the bride getting ready, completely okay. And she just ended up touching a lady's feet. And after that, the Fairas started. And after the Fairas, she was somebody else. And nobody could find who that lady was. I had attended that wedding personally. Nobody could find who that lady was. She did not come in any of the videos. And the videos were recorded. उस समय video recording होती थी. Oh. पूरा recording है उसकी, यहाँ कौन खड़ा है, यहाँ कौन खड़ा है, पर वो lady video पे capture ही नहीं But हुई. can be seen. No, that lady, the bride can be seen touching the feet, but there is no person standing over there. Oh, that's scary. Yes, and that was my first paranormal experience as a child. And जो वो bride थी वो अभी तक stable नहीं है. उसके अंदर अभी भी 2 जिन हैं. अब आप ये पूछेंगे कि ये फिर क्यों होता है, लोग क्यों करते हैं? देखिए, बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिसमें एक वर्जिन की, एक वुड बी ब्राइड की कुछ चीजों की जरूरत होती है. तो ऐसा कहते हैं कि जिसकी शादी होने वाली होती है उस पे अगर हम उस पे पोजेशन कर लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है इन द नेम ऑफ द डेविल. तो बहुत लोग अपनी सिद्धियों को पाने के लिए ऐसे लोगों को, जो ब्राइड्स होती हैं, उनको स्पेशली अटैक करते हैं और उनकी बॉडी के साथ जो है चिपक जाते हैं. दूसरा रीजन ये है कि जो ये एंटिटीज चिपकती हैं उनके साथ, उनका उस ब्राइड के साथ पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप होता है. Okay. तो बहुत बार जैसे एक मेरे पास केस आया था जिसमें एक लड़का और लड़की थे पिछले जन्म में, और उन्होंने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था. जो चीज हम जितनी इंटेंसिटी से करेंगे ना, वो उतनी ही इंटेंसिटी से प्ले आउट होती है. तो उन्होंने खून, अपना हाथ काट के, दोनों जनों ने अपना खून मर्ज करके ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे. Okay. क्या होता है कि जब हम
जन्म ले लेते हैं तो हमारे पास एक चीज होती है कॉल्ड फ्री विल या चॉइस. हम्म, तो एक पर्सन ने, जो वो गर्ल थी, उसने तो चॉइस से बोला कि अब मुझे ये नहीं चलाना नेक्स्ट अच्छा, जन्म में. ओके, और वो जो इंसान था, वो उसने जन्म नहीं लिया था तब तक, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि इसने जन्म ले लिया है और इसने ये कॉन्ट्रैक्ट काट दिया है, ही चोज नॉट टू टेक बर्थ. और उसने कहा कि जब तक तुम्हारी शादी होगी तो होगी तो मुझसे ही. हम्म, सो वो तांत्रिक के पास, सिर्फ तांत्रिक सोल्स को कैप्चर नहीं करते, सोल्स भी तांत्रिक के पास जाती हैं अपना काम कराने के लिए. अच्छा, इट्स अ टू वे स्ट्रीट. रियली, हाँ जी. दैट्स इंटरेस्टिंग. तो फिर उसने कहा कि जब इसकी शादी होगी उस टाइम पे, व्हेन शी इज कंप्लीटली रेडी टू गेट मैरिड, शी विल गेट मैरिड ओनली टू मी. तो वो सोल उसके साथ चिपक गई, और हस्बैंड और वाइफ के बीच में कभी भी फिजिकल रिलेशन बनाए नहीं. एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाया. हो ही नहीं पाया. Wow, that's so scary. ओके, मैम एक और बात है, जैसे कि कहते हैं कि जब, इसीलिए शायद दुल्हन को व्हेन शी इज अबाउट टू गेट मैरिड, जी. घर वाले काफी उसके अराउंड रहते हैं, बोलते हैं बाहर मत निकलो, और ये मत. कहते हैं कि तेल लगा के रखो, अट्रैक्टिव हाँ, मत लगो, यस, पुराने कपड़े पहन के बाल रखो, मत खुले बाल रखो. मत खुले रखो, क्योंकि बहुत ससेप्टेबल होती है. देखिए, एक वर्जिन की, एक वुड बी ब्राइड की जो बलि होती है, वो बहुत सिद्धियों को पा सकती है. अच्छा, तो लोग ऐसी चीजों का वेट करते हैं. आजकल के यंगस्टर्स को, और वैसे पहले भी ये चीजें हुई है, बट आजकल तो और भी ज्यादा, ये ऊझा बोर्ड से जो स्पिरिट्स को बुलाते हैं, मैम क्या ये एक्चुअली होता है, एंड होता है तो लाइक डू स्पिरिट्स रियली विजिट अस, हाउ Oh डज इट हैपन? yes, oh yes. इट्स वेरी There फैसिनेटिंग. are, and very scary. There are so many movies made on this. I want to tell my audience, you should never, ever, ever try an Ouija board. There's a movie called Veronica यस, that's यस, made on this. यस. It's a Spanish case that went wrong. There are so What many are the risks of? planchets and Ouija boards. देखिए, बहुत restless spirits हैं. Okay. ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर एक इंसान है, पहले spirits to इंसानों की जो रेशियो थी वो कम थी, एक इंसान और एक स्पिरिट ही होती थी. अब अर्थ की पॉपुलेशन ऐसी है कि अगर 100 लोग हैं तो 800 स्पिरिट्स हैं, 1:8 हो गई है. और ये सारी स्पिरिट्स रेस्टलेस हैं. इसका खैर बहुत सारे इसके रीजंस हैं अपने में, क्योंकि हम डेथ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते. क्राइम से डेथ हो रही है, जी, असैसिनेशन से हो रही है, रेप से हो रही है, मर्डर से हो रही है, हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो स्पिरिट्स रिलीज नहीं होती हैं लाइट में. ये सारी स्पिरिट्स बहुत बेकरार हैं किसी से बात करने के लिए. तो ये ऊजा बोर्ड के थ्रू जब आप इन्हें बुलाते हैं तो वो बिल्कुल तैयार हो जाती हैं. मैंने सिर्फ ऊजा बात बोर्ड्स खुद करने के देखे हैं. लिए. हाँ, बच्चे बुला लें, बड़े बुला लें, और एक नाम से अगर आप बुला रहे हैं या एक अल्फाबेट से, thousands will come and they will not go back because they are so bored where they are. They don't know, they don't have a body. Please understand. एक स्पिरिट ट्रैप्ड है, उसके पास बॉडी नहीं है. अब उसको अपना रिवेंज लेना है या उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो या तो वो मीडियम से करे, जैसे मैं मीडियम हूँ. तो मेरे घर के बाहर अगर मैं रोज की क्लियरिंग नहीं करूं, तो मेरे बालकनी के बाहर, मेरी खिड़कियों के बाहर रोज हजारों स्पिरिट्स होती हैं. क्लियरिंग नहीं करूं का क्या तो मतलब? मैं उनको हर रोज लाइट में भेजती हूँ, हजारों को भेजती हूँ ओह, हर रोज. इट्स अ पार्ट ऑफ माय ऑफिस रूटीन. माय Really? सेक्रेटरी नोज इट. यस, ओह, फ्रॉम 9 to 10 AM स्पिरिट क्लियरिंग. किसकी? ये जो अर्थ की स्पिरिट wow, क्लियरिंग. that's insane. या सो अब इतनी स्पिरिट्स अगर हैं और कितने इतने से मीडियम्स हैं, क्यों नहीं लोग मीडियमशिप सीखना चाहते? हम क्यों सीखें? बट इट्स अ नोबल प्रोफेशन. अगर आप अर्थ को क्लियर कर रहे हो तो कुछ तो बोझ कम हो रहा है. तो ये जो स्पिरिट्स हैं, दे आर रेडी टू कम. नाउ व्हाई शुड दे गो? आपने बुला लिया, अब आप उनको झेलो. अब वो आपसे काम करवाएंगी, आपकी बॉडी में घुसेंगी, पार्शियल पोजेशन करेंगी, फुल पोजेशन करेंगी. उस मूवी में उस लड़की को मरना पड़ता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि ये मेरे साथ ही अटैच्ड है, मैं जाऊंगी ही तो ये जाएंगी. करेक्ट. लेकिन मुझे नहीं पता उस मूवी में ये दिखाया है कि नहीं, कि जब ऐसे लोग जिनके साथ स्पिरिट अटैच हो जाती है, जब इनकी स्पिरिट निकलती है, तो उनके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए कि वो पोर्टल खुले और वो लाइट में जाएं. नहीं तो वो भी उनके जैसी ही एक ट्रैप्ड सोल बन सकती है. सो आइदर विच वे, ऊजा बोर्ड्स आर रियली रियली बैड. हम मूवीज देखते हैं, कृष्णा कॉटेज, बहुत सारी मूवीज देखते हैं. ये सारी जो स्पिरिट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हुक ढूंढ रही हैं, एक इनविटेशन ढूंढ रही हैं. हम क्यों इनको इनवाइट करें? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ऊजा बोर्ड्स आर रियल, दे आर हॉरिबल, they are scary, and they are not only a threat to the individual, but they are a threat to his family and his entire society, his universe.
when we talk about spirits, there's also a saying that there are good spirits and then there are bad spirits. So जब ऊजा बोर्ड से हम spirits बुलाते हैं, तो what is the probability of getting good spirits? And Almost none. so good spirits exist ही नहीं करते? Are you saying that? करती हैं, लेकिन वो ऊजा बोर्ड जैसी चीजों के साथ नहीं आती. The aggressive ones come first. Okay. जिनका रिवेंज थर्स्ट ज्यादा होता है, वो पहले आती हैं. गुड स्पिरिट्स को लाइट के बहुत ऑप्शंस मिलते हैं. जब हॉस्पिटल्स में लोग मरने वाले होते हैं, गुड स्पिरिट्स वहां जाके खड़ी हो जाती हैं. Okay. उनको पता होता है कि जब ये मरेगा, इसकी आत्मा जाएगी, वो पोर्टल खुलेगा, उसमें से हम भी निकल जाएंगे. Oh, okay. Yeah. Wow, that's interesting. Okay, so just imagine बहुत सारे haunted houses हम देखने को मिलता है. यूट्यूबर्स आजकल ये बहुत कर रहे हैं. They go to these haunted spaces and all of that. So as a psychic, can you sense, once you enter a house, can you sense a presence of a spirit? Absolutely. You can. Absolutely. And can you also sense, is it a good spirit or a bad spirit? Absolutely. Their intentions. Yes. Tell me something about it. I've done a lot of house clearings. It's Okay. part of what I do. I also teach people how to handle entities. So these are workshops that are held. I have been to many houses where there are spirits that are just mischievous. I've also been to houses where there are spirits that are bloodthirsty. I've also been to houses where, because the house was not cleared on time, a child has got possessed. Oh. I also want to tell my audience that don't take hauntings or possessions lightly. With the advent of Airbnb and all of that, we have just beautified all these haunted places and called them, lodges and please stay here. Rather than looking at what amenities hotels offer, you should first know the history of the place you're going to go and stay with your family. Everything is just not about affordability of money. क्यों इतनी सस्ती मिल रही है कोई चीज, या क्यों स्पेशली पहाड़ों पे जो एयरबीएनबीज होते हैं वो बहुत हॉन्टेड होते हैं. उन्होंने किसी को बेच दिया, कम में मिल गया, यंगस्टर्स ने सोचा हम इसका वो बना लेंगे. हम किसी भी चीज की हिस्ट्री में नहीं जाते. सो मैं शिमला के पास एक घर में गई थी जहाँ पे इट वाज एयरबीएनबी एंड एक कपल वहाँ पे था. कपल गया तो नॉर्मल ही था, एंड ऑन द सेकेंड डे a person next to their room was found dead under mysterious circumstances. तो डॉक्टर्स ने कहा कार्डियक अरेस्ट हो गया. ठीक है. थोड़े दिनों के बाद वहाँ पे 2 एनिमल्स की डेथ हो गई, एक कैट और एक डॉग की. फिर थोड़ी देर के बाद ये लड़की के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग गए. एंड उसने इस पर्सन को कहा कि आप चले जाओ, मुझे मतलब आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद यू. इस लड़की को उसके साथ रहते रहते डर लगने लग गया. दे वर गोइंग टू गेट मैरिड. And she called off the wedding and she started doing strange things like going out of the room at night. And एक दो बार लोगों ने फॉलो भी किया, तो जंगलों में जाके पेड़ों के पास जाके वो गायब हो जाती थी. तो ऐसा करते करते लोगों को लगा कि नहीं हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वगैरह वगैरह. स्टाफ ने भी रिजाइन कर दिया. That lady never came back. They locked the place. जो ओनर्स थे जिन्होंने एयरबीएनबी वालों को दिया था चलाने के लिए, उन्होंने मुझे बुलाया. And the day that I took the case, that lady came to me and she said that if you come there, if you even get up from your house, if you come there, she listed a set of things कि ये आपकी life में हो जाएगा. But that is quite common dhamki. Okay. And me and my team, we decided to go. Usually मैं बहुत ज़्यादा hauntings के cases नहीं लेती. I get scared of watching horror movies. That's my honest confession. जब कोई चीज आई जाती है मुझे लगता है इसको रिलीज करना है. Then that lady came to me पूरे रास्ते में. That lady kept coming to me as an innocent person saying मुझे बचा लीजिए, मेरे ऊपर ये आ गया है. But that was also a lie. Because finally when we went there, before we went there, I told the police that this lady has died. And they said but we have not found the body. So हमारे हिसाब से वो लापता है. अच्छा. 1 हफ्ते के अंदर उनको बॉडी भी मिल गई. तो जो आ रही थी और कह रही थी कि मेरे को बचा लीजिए, वो भी एक it was a plot. She was misguiding. She was misguiding and she was trying to be the victim ताकि हम आए ना या हम उसको उस तरीके से देखें. और इसकी हिस्ट्री ये थी वहाँ पे जाके जब हमने क्लियरिंग करी कि वहाँ पे ऑलरेडी एक सिमेट्री के ऊपर वो बना हुआ था. तो जिसका घर था, जिसने किसी से खरीदा था, उसने उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी. क्या होता है आजकल लोग बिजनेस शुरू करने के चक्कर में किसी भी लैंड की क्या हिस्ट्री है इसको नहीं देखते. सो आई डू दिस ऑल द टाइम. आई ऑल्सो टीच दिस वर्क. Is this the only thing I do? No. Yeah. But
it is a bit like playing with fire, if you ask me. Talking about a flat, the most scariest thing I personally feel is a suicide. Yeah. And whenever any case of suicide, जब भी हमें सुनाई देता है, it kind of scares all of us that life कितनी unpredictable हो सकती है. Talking about suicide, many people want to connect with a person who's died by suicide. Do you think it's possible? Of course, it's possible. I've connected myself to Sushant Singh and to many other people To who have Sushant committed Singh suicide. Rajput, you have connected. Yes. How was that? Very intense experience, and also an experience that left me very flabbergasted and tells me that murder necessarily does not happen by physically hitting someone. A murder can be done emotionally also. Emotionally also. So that's all I would like to say. After suicide, the soul goes to a healing hospital, a soul healing hospital. I mean, that's what I can loosely call it. It's a space So- that is protected by the angels. We have something called spirit doctors, and spirit doctors protect these souls who have committed suicide. You'll be also very interested and surprised to know that suicides are not in the end done by conscious will or choice. In the end, suicides are aided by an entity attack. आप खुद सोचिए, That's हम surprising. अपनी उंगली भी काट नहीं सकते. मैं आपको अभी बोलूंगी आप चाकू लेके अपना हाथ काटिए, आप नहीं काटेंगे. तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है. The chances are 0 to negligible. At that point in time, of course, he's driven to a certain point, and जो लास्ट होता है, मैंने एज ए साइकिक और मीडियम बहुत सोल से बात करी है, जो लास्ट का पार्ट होता है, लास्ट के 5 से 7 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट, जिसमें वो घटना घटती है, ही इज पुश्ड बाय द एंटिटीज. And why would he be pushed by the entities? Because the entities want a portal. Who is that entity? Many entities. And if it is a revenge, then it could be entities that have been connected with him in his past life. So usually in the cases of suicide, when somebody has a close suicide encounter, they always say कि यार 2-3 घंटे पहले तो यार ये इतना खुश था, इतना हैपनिंग था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था या सोच भी नहीं सकती थी या कुछ ऐसा कर सकता है. And then when you say that Yeah. कि it's driven by something, it just clicked for me Yes. कि maybe you never know कि अगर एक इंसान 3-4 घंटे पहले हंस रहा है, खेल रहा है, सबसे बातें कर रहा है, और फिर अचानक से ऐसा क्या होता है that he or she takes Yeah, their own it is life? very much driven by entities. I would not negate the fact that these people, their chart is already weak. Their moon is weak, placed in their chart. Okay. So because of this, they are prone to deep feelings. They are very sensitive people, the ones who commit suicide. They are so sensitive that a small thing that may not bother you and me bothers them to the extent that they can do it, but necessarily they are not doing it on their own. Okay. So it is definitely driven by entities at the last minute. And no, many of the suicides are not planned in advance. It's not. No. So as a psychic, there's always this question that everybody has in mind that एक spirit, एक आत्मा कैद है. So do you guys have that kind of a power to open that gate for that trapped soul or trapped spirit? Yes, it's done as a medium, not as a psychic. Psychic is somebody who is very intuitive Okay. and can tell you your future or what you're going through. A medium is a person who talks to souls Okay. and who can open portals for spirits to pass over. I do that, like I said, I do that every day. And I also teach this work to people. Okay. And there's also one thing, ma'am, that it's been trending on the internet that waking up at 3 a.m. has something to do with spirituality. 3 a.m. is the golden time for spirituality. What do you have to say about that? I have to say that people have confused 3 a.m. getting up with Brahma Muhurat, which is not true. Brahma Muhurat is 1 hour 28 minutes before sunrise. So if in Delhi sun is rising these days at 7 o'clock, then back calculate and say that 5:30 the Brahma Muhurat starts. Waking up at 3 o'clock is not spiritual. In fact, till 3:30 it is a tamas time and it is a time of dark entities. Oh. Waking up anytime after 4 or just before 4 is a time where you are woken up by the powers of the universe or your spirit guides so that you can do your sadhana or you can do your universal work. To be on the safer side, I would say that try waking up at 4 4 a.m. and not very much before that.
that is still considered to be, a dark hour. Okay. Internet, please listen. 3 a.m. is not what we're thinking of. Everywhere it's trending. Yeah. Waking up at 3 a.m. makes you more spiritually active. But thank you. Thank you so much for clearing that out. It is also said that full moon is a period where your energies are at the highest, and you should be meditating at that time, and the spiritual experiences are at the peak. Is that true? Absolutely. The moon plays a huge part in our lives. Moon affects water. As you know, the Hmm. sea, we learnt it Yes. in school. Our bodies are 70% water. Yes. And moon in astrology denotes emotions. Hmm. So if moon is controlling, and moon is very heightened in the full moon time, and water bodies are responding to it, then our body is also responding to it. Our emotions are heightened at the time of full moon. Okay. So while if we are settled, we must do sadhana, on full moon, we should do release work. You'll know that people are getting very overwhelmed on full moon. Hmm. Yesterday was full moon. Yes. So you'll see a lot of anger, rage, sudden lash out, fights between couples. All of this happens during full moon because everything is just full and ready to just burst out. New moon is the time to manifest things, and full moon is the time to release and let go. Talking about meditation, so when you meditate at full moon, people say that it gives you much greater results. Is that also true? Yes, because our emotions are heightened. I told you that any energy that is at a peak at any point in time. So, full moon and new moon are days that the universe is showing you energy pathways. Okay. It's like a fast train. Hmm. All you have to do is get onto it, Hmm. and it'll take you. But it requires a stable mind. Suppose you're very frustrated, you're very angry. Now, on full moon, you feel, I just want to end this relationship. Hmm. There's no point in doing a meditation at that time. Hmm. So, first do your release work, let it all go, take a salt water bath, and after that, sit in any kind of a meditation. Okay. And you should also know what is the intention of the meditation. Hmm. Do you want to manifest something? Then Something. best done on Amavasya. Do you want to let go of something from your life, your unwanted behaviors, addictions, toxic relationships, a habit, procrastination, laziness? Then do it on full moon. Okay. And talking about death and reincarnation, it's quite intriguing. The reincarnation thing. I want to know how soon after death does reincarnation happen? Well, there's no set time as such, but we do not attempt to talk to a soul before 21 to 28 days. So let's say someone has passed over and you desperately want to speak to that person. Best to wait for at least a month, and that also under natural circumstances death, not under trauma, murder, accident, Okay. sudden, unexpected death, what we call akal mrityu. Hmm. और एनी काइंड ऑफ अ ट्रॉमा टू द बॉडी, किसी की जलने से डेथ हो गई, किसी का मर्डर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इनके साथ कम से कम 6 months के बाद, और बाकी जो नेचुरल डेथ्स होती हैं उनका एटलीस्ट अ मंथ. Now when do they reincarnate completely depends upon how much time they want to take to plan their lessons of next life. Okay. So above us is a spirit world, and that spirit world also has, for example, conference rooms where there's, discussions going on that how did you live your life, and people go through the recap of their lives. It really, really depends. There is no human time that I can measure and tell you 1 साल में हो जाती है कि 2 साल में हो जाती है. It's a very complicated process because birth बहुत सोच के लिया जाता है. बहुत कार्मिक डेट्स को हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि एक ही जन्म में ये भी हो जाए, ये भी हो जाए. So it's not specific. Okay. You said that जो अननेचुरल डेथ होते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगता है. ऐसा क्यों होता है? मतलब इसमें क्यों क्योंकि वो 6 months तक तो स्पिरिट डॉक्टर्स के साथ होते हैं. वो 6 months तक They are हील कर रहे healing. होते हैं. Okay. Okay. वो इस चीज के साथ इन टर्म्स आ रहे होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सच में ही सुसाइड किया, तो सुसाइड वाला जो सोल होगा वो उसको स्पिरिट गाइड्स बहुत समझाएंगे कि आपने गलत किया. वी गेव यू द गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड यू जस्ट Okay. took it away. So he may have to serve other souls before he can take birth. He may serve as a teacher, he may decide to cook food for them, he may decide to read a lot, he may decide to be in a library, lot of things. Okay.
talking about rituals, there's this concept of Swarg and Nark, heaven and hell. एंड ऐसा कहते हैं कि तर्पण जो एक रिचुअल होता है, इट कैन हेल्प souls that are stuck in hell. First of all, is it true when people say अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और नरक में जाओगे? तो स्वर्ग और नरक का briefly, if you can explain the concept, and also how a ritual like tarpan can help a soul pull back from what they say is hell. Rituals cannot pull a soul back into hell or heaven. There are no concepts Okay. called a hell or heaven. There's It no basically nothing like. no. There is Okay. something called the spirit world where everyone goes after they die from here. Okay. Once they go to the spirit world, they are contacted by their Akashic guides, and they are the movie of their life, how they lived it, is shown on a wide screen. And every opportunity, the guides will say, "See, you had an opportunity to do this, you didn't do it." The soul will say, "Yeah, I didn't do it." So, notes for the next life. Okay, so this concept of heaven and hell doesn't exist. Okay. What exists is a world. It's like you've gone to perform, Hmm. and when you go backstage, they'll ask you, "Did you perform well? Did you do it well? Did you Okay, fall down?" It's okay. like that. That's Uh, interesting. Souls and Shraddh and the rituals of Shraddh have a very deeper meaning. When we do Tarpan, we are not only requesting our ancestors as energy beings to release their karmas or to release their blocks, we are also asking for their blessings to release those blocks from us and our family. Hmm. So instead of thinking that Tarpan is going to take a soul from hell to heaven, we must say that as energy beings, we have energetic blocks in our aura, Okay. okay, of negative thoughts, of unmet desires. Hmm. Those blocks, we say to our ancestors as energy beings, please release those blocks. We will do our best to accomplish what you could not accomplish. Hmm. So you be free and take new births and leave it to us, because we have a life and we are going to do our best to make sure that what was incomplete, we will do it. So it's not releasing them literally from one world to the other, but it is releasing them energetically from their shortcomings or their unmet desires. Wow, that's beautifully explained. And thank you once again, ma'am, for doing such a beautiful podcast. The ancestral talks that we have had, I think it was beautiful, and it personally, it was a very relieving experience for me, to be Thank very you. honest. Thank you so much. I think you're such a great soul. You have a very nice aura, from what I can say. Thank you. You enter a space and I think you own it. So this is something that I would like to tell our viewers about you. And that was Dr. Manmeet. Thank her for sharing her incredible insights. If you enjoyed this conversation, don't forget to subscribe, leave a review, and share it with someone who'd love it too. Thank you so much, ma'am, once again for being here. Thank you.